Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 6 English and we are doing unit number 3, which is a newspaper article, and this is the second lecture for grade 6 English. In this lecture we are going to cover the topic of past perfect tense from the language portion of unit number 3. Then we will move towards the next section, which is word study, and the last topic of our today's lecture is going to be article writing. So first of all, you have to open your English classwork notebook and prepare your index. For your index you will write down the serial number, date and the topic, which is newspaper article. Before we begin this lecture, just make sure that you have your English students book, your English classwork notebook and your English workbook and complete stationery with you. Listen to the teacher very attentively and carefully and write down all the things said by your teacher in your notebook or book or workbook, wherever I ask you. If you find anything difficult, you already know that you can send a WhatsApp voice note with your name, with your name, grade, subject and the lecture about which you need to ask anything. So let's begin today's lecture. Just open your English students book, page number 23. We have done the first section of language portion, which was present perfect tense, and this is the second portion of language portion, which is past perfect tense. Okay, do you know what is a tense? Yes, you already know that tense means the type of a time period about which the sentence is described. कोई भी sentence, कोई भी बात किस time period के बारे में कही गई है उसे हम tense कहते हैं. In the past perfect tense, the sentence is or the paragraph is or the text is about what happened before another action in the past. Suppose two actions happened in the past. The second action is written in simple past and the action before the simple past is called past perfect tense. I hope this is a bit difficult for you to understand. You will understand it with some examples, and then when I will explain you in detail, you will get it. Okay, past perfect tense uses the helping verb had with the past participle form of verb. As you have learned that in the present perfect tense we used has and the third form of verb. In the past perfect tense we are going to use had with the third form of verb. For example, I had eaten my lunch. I had eaten my lunch. Here had is the helping verb, which tells that this is past perfect tense, and eaten is the past participle form of verb, which tells that this is a perfect tense. Okay, from students book, page number 24, we will solve the question number 1 here. The statement of this question is, read the passage below and find 6 verbs in the past perfect. Okay, here in a pink bar a paragraph is given and you have to find out the verbs which are in past perfect tense. आपको पता है कि past perfect tense में had के साथ verb की third form आती है. So इस paragraph में जहाँ पे भी had के साथ verb की third form आएगी आपने उसे underline कर लेना है और आपको पता चल जाएगा कि ये past perfect tense verb है. Okay, I am going to read this paragraph for you with mentioning the past perfect tenses. Read it with me on page number 24. Before the holidays, the principal had said she wanted every student to do something to help the environment. Dear grade 6 students, you will have to underline all the past perfect verbs. I am giving you here all these past perfect verbs. You will have to just underline on your book. Back to the reading. When we came back to school, our class did a survey to find out what people had done. The 10 students had started to recycle bottles and more than 20 had reused carried bags.
Mr. Jamieson had planted 2 trees in his yard because trees absorb carbon dioxide. The principal said she had walked to the store instead of going in her car. We have found 6 past participle verbs in this paragraph. Have you underlined all? That's good. Our next task is to identify from a sentence that what is the simple past tense and which is the past perfect tense. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब पास्ट टाइम में, गुजरे हुए टाइम में 2 एक्शंस परफॉर्म हुए हों तो जो पहला वाला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और जो सेकंड वाला एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट होता है. द सिंपल पास्ट टेंस एंड द पास्ट परफेक्ट टेंस आर ऑफन यूज्ड in the same sentence, not always but often. Okay, when 2 actions happen in the past, we put the one which happened first in the past perfect tense. जब past में 2 actions हुए उनमें जो पहले perform हुआ उसको हम past perfect में write down करते हैं. I hope you all have understood what I am trying to explain. For example, I noticed that he had left his books behind. इस सेंटेंस पे ज़रा गौर करें. इसमें 2 एक्शन हैं, एक तो नोटिस है और दूसरा ये कि किसी ने अपनी बुक्स हैड लेफ्ट बिहाइंड. ओके, अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे नोटिस वाला एक्शन सिंपल पास्ट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा और लीविंग वाला एक्शन सिंपल पास्ट आएगा या पास्ट परफेक्ट आएगा. अब आपने सोचना ये है कि पहले मैंने नोटिस किया या पहले उसने बुक्स को वहाँ छोड़ा. पहले उसने बुक्स को वहाँ छोड़ा, बाद में मैंने नोटिस किया, इसलिए बुक्स को वहाँ छोड़ने वाला एक्शन जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो नोटिस करने वाला एक्शन है वो सिंपल पास्ट में आएगा क्योंकि बाद में मैंने नोटिस किया. सो इट बिकेम आई नोटिस्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड. डिड यू अंडरस्टैंड इट? Okay, you will understand it more better when we will do the exercise number 2 here. On page number 24 again, question number 2 is complete these sentences with the correct form of verb. Each sentence should have 1 verb in the simple past and the 1 verb in the past perfect tense. In 6 sentences में 2 verbs in each sentence are there और हमने ये देखना है कि कौन सा वर्ब सिंपल पास्ट में आएगा और कौन सा वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा. इन एवरी सेंटेंस 2 एक्शंस आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस. कोई एक्शन पहले हुआ होगा, कोई एक्शन बाद में हुआ होगा. जो एक्शन पहले परफॉर्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो एक्शन बाद में परफॉर्म हुआ उसे सिंपल पास्ट में लिखेंगे. लेट्स लर्न इट. Sentence number 1 is when Carl dash reading he dash away his books. Okay, and the actions are finish and put. When Carl dash reading he dash away his books. पहले कार्ल ने अपनी रीडिंग कंप्लीट की या पहले उसने बुक्स दूर रखी? पहले उसने रीडिंग कंप्लीट की, बाद में उसने अपनी बुक्स को दूर कहीं रखा. तो पहले एक्शन कौन सा परफॉर्म हुआ? फिनिश रीडिंग. So this action will be in past perfect and the other action putting away his books will come in the simple past and it will become when Carl had finished reading he put away his book. You have to fill these blanks on your book. When Carl had finished reading he put away his book. Sentence number 2 is he dashed the rubbish before dad dashed him not to. Okay, he dashed the rubbish before dad dashed him not to. उसने पहले रबिश को बर्न कर दिया और डैड ने उसे बाद में कहा कि ऐसा नहीं करना था. उसने पहले क्या किया? रबिश को बर्न कर दिया और डैड ने उसे बाद में कहा कि ऐसा नहीं करना था. कौन सा एक्शन पहले हुआ? डैड ने उसे पहले बताया या उसने रबिश को पहले बर्न किया? उसने रबिश को पहले बर्न किया. सो दिस विल बी द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द एक्शन ऑफ डैड टेलिंग हिम नॉट टू विल बिकम द सिंपल पास्ट एंड द सेंटेंस विल बिकम ही हैड बर्नट द रबिश बिफोर डैड टोल्ड हिम नॉट टू. ही हैड बर्नट द रबिश बिफोर डैड टोल्ड हिम नॉट टू.
Have you done this? Okay. Sentence number 3 is darkness dash by the time the bus dash. Darkness dash by the time the bus dash. Darkness पहले आ गई और बस बाद में आई, यानी कि अंधेरा पहले छा गया और बस बाद में आई. So the falling of darkness will become the past perfect tense and coming the bus will become the simple past tense, and the sentence will be darkness had fallen by the time the bus came. Darkness had fallen by the time the bus came. Sentence number 4 is Alicia dash a long way before she dash tired. Alicia dash a long way before she dash tired. अलीशा ने पहले बहुत सारी साइकिलिंग की या पहले वो टायर्ड हुई? पहले उसने बहुत सारी साइकिलिंग की, उसके बाद उसने टायर्ड फील किया. सो द फर्स्ट एक्शन इज़ साइकिलिंग एंड द सेंटेंस विल बिकम Alicia had cycled a long way before she got tired. Alicia had cycled a long way before she got tired. Sentence number 5 is Granddad dash a bicycle after his car dash down. Okay. Granddad dash a bicycle after his car dash down. Granddad की कार पहले ख़राब हुई या उन्होंने बाइसिकल पहले बाय की? उनकी कार पहले ख़राब हुई, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी न्यू बाइसिकल बाय की. पहले क्या हुआ? कार ब्रेक हुई, उसके बाद उन्होंने बाइसिकल बाय की. सो द एक्शन विल बिकम Granddad bought a bicycle after his car had broken down. Granddad bought a bicycle after his car had broken down. पहले उनकी कार ब्रेक डाउन हुई, बाद में उन्होंने बाइसिकल बाय की. Sentence number 6 is before he dash out he dash his room. वो पहले बाहर गया या पहले उसने अपने रूम को टाइडी अप किया? उसने पहले अपने रूम को टाइडी अप किया, उसके बाद वो बाहर गया. सो द सेंटेंस विल बिकम बिफोर ही वेंट आउट ही हैड टाइडीड हिज रूम. बिफोर ही वेंट आउट ही हैड टाइडीड हिज रूम. हैव यू डन दिस एक्सरसाइज ऑन बुक? That's good. Let's move towards the next section, which is word study. And in this word study we are going to learn about some words that are often confused. We get confused that what word is written here or what word is to be used in the sentence, because these words are often pronounced same. For example, some words are often confused. For example, affect and effect. Both the words are pronounced almost same but have different meanings. One is a verb and the other is noun. One is affect and the other is effect. Affect means to take any affect verb, and effect means the result of something. Let's move towards the exercise on page number 25. Exercise is choose the right word to finish these sentences. Check out your answer in the dictionary. Okay, here 6 sentences are given, and for each sentence there are 2 words which are confused here, and we have to pick the correct word that is going to be used in this sentence actually. So let's begin. First sentence is did you accept the invitation? Here for word accept 2 different spellings are given. One is ACCEPT and the other is EXCEPT. Okay dear grade 6 students, ACCEPT accept means कबूल करना, कुछ agree होना किसी चीज़ के लिए, and the EXCEPT means else, something else. अब इस सेंटेंस में इन्विटेशन की बात हुई है तो समथिंग एल्स वाला एक्सेप्ट नहीं आएगा, बल्कि ACCEPT वाला एक्सेप्ट आएगा. डिड यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन? ACCEPT एक्सेप्ट. डिड यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन? मार्क टिक ऑन द वर्ड एक्सेप्ट.
and you have to do this exercise on your classwork notebook. You just first have to write down the statement of this exercise. First of all, you will prepare your classwork page, of course, by writing date and day and the topic, etc. Then you will write down the exercise statement. Then you will write down all these sentences with the correct word. For the first sentence, you will just write down the solution sentence, which is, did you accept the invitation? Sentence number 2 is, I recycle everything dash plastic. Accept plastic or accept plastic? Accept plastic. EXCEPT. Accept plastic. I recycle everything except plastic. Sentence number 3 is, Dr. Strong saw some patients this morning. One word is patients and the other is patience. डॉक्टर पेशेंट्स देखता है या पेशेंट्स को डील करता है? ऑफ कोर्स पेशेंट्स. PATIENTS, पेशेंट्स. डॉक्टर स्ट्रॉन्ग सॉ 10 पेशेंट्स दिस मॉर्निंग. सेंटेंस नंबर 4 इज, आई एडमायर द पेशेंट्स और पेशेंस ही शोज़ विद द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के साथ कैसा बिहेवियर किया जाता है? पेशेंस का बिहेवियर, टॉलरेंस का बिहेवियर. सो हियर वी विल चूज़ द वर्ड patience. I admire the patience he shows with the children. Sentence number 5 is, that knot keeps coming loose or loose. Loose, जो not tight. Loose means not tight. That knot keeps coming loose. I don't want to dash my purse. I don't want to lose my purse. Have you done this exercise on your English classwork notebook? That's good. Now let's learn about the article writing on the same page, page number 25. First of all, we need to learn that what is an article actually. An article is a piece of writing including with others in a newspaper, magazines or other publications. जो newspapers और magazines में लोगों ने अपनी suggestions के साथ लिखा हुआ होता है. समटाइम्स वो कोई स्टोरी भी होती है, समटाइम्स वो किसी भी फैक्ट के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक टेक्स्ट होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई साइंटिफिक कोई टेक्स्ट होता है, उसे हम आर्टिकल कहते हैं. जस्ट लाइक यू हैव लर्नड इन दिस लेसन, इट वाज आल्सो एन a न्यूज़पेपर आर्टिकल विच टेल्स अबाउट दैट क्लाइमेट चेंजेस वाइप्स आउट फ्रॉग्स. ये इसका टाइटल था और इससे ही हमें पता चल रहा था कि हमें इस लेसन में क्या पढ़ने जा रहे हैं, और ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल था. While writing an article, we write writer's name, a clear title of the article and clear points to make our article solid. And of course some facts and figures are also used. Facts and figures means कुछ ऐसी बातें कि ये सपोज़ आप जैसे इस लेसन में फ्रॉग्स के बारे में था, तो उसमें ये बताया हुआ है कि किस एरिया के बारे में ये बात हो रही है और क्लाइमेट चेंजेस की परसेंटेजेस क्या हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट परसेंटेजेस कैसे हैं. और पेज नंबर 21 पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, लाइन ग्राफ. इस तरह के जो फिगर्स होती हैं उन्हें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं. और न्यूज़पेपर आर्टिकल में डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नेसेसरी समटाइम्स. So now let's discuss our today's homework. You will have to write down your diary. Please open your diary and write down date if you haven't written it yet. Subject English, and note down your homework, which is write a newspaper article about cutting greenhouse gas emission on English homework notebook. Okay, when you need to write down this article, you will have to think about some things. You just open page number 25 and here is the procedure written how to write down an article. First of all, you will have to think of a short but catchy headline. सबसे पहले उसके बारे में एक headline बनाएंगे जो कि एक टाइटल होगा. वो सिंगल वर्ड टाइटल नहीं होगा, वो एक फ्रेज़ होगा, एक हेडलाइन होगी. जैसे आपके लेसन में क्लाइमेट चेंज वाइप्स आउट फ्रॉग्स एक सेंटेंस टाइप फ्रेज़ है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम इस आर्टिकल में क्या लर्न करने जा रहे हैं. आपने अपने आर्टिकल के बारे में सबसे पहले एक हेडलाइन सोचनी है.
देन राइट एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस समिंग अप द प्रॉब्लम। उसके बाद आपने अपने पूरे आर्टिकल को सम अप करता हुआ एक डेफिनेशन टाइप, इंट्रोडक्शन टाइप सेंटेंस राइट डाउन करना है। देन राइट वन पैराग्राफ आंसरिंग ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। उसके बाद आपने सोचना है कि व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे पहले ये कि ये होती क्या हैं, उनको डिफ़ाइन करेंगे। देन वाई शुड वी कट दैम, फिर हम ये सोचेंगे कि हमें इन्हें कम क्यों करना है। हाउ कैन वी कट ग्रीन हाउस गैसेज, फिर आप इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे। देन राइट अ कंक्लूडिंग सेंटेंस विच सम्स अप व्हाट यू हैव रिटन। First of all, dear grade 6 students, you will make a rough draft of your writing. You will show it to your mother or your elder sister or elder brother or anyone जो इसे चेक करके आपकी मिस्टेक्स निकाल सकें। फिर आप उसको नीट करके अपनी होमवर्क नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। Another homework for you is to do workbook page number 11 and 11 till 13, which includes some questions of past perfect tense and some of the words that are often confused. I already have done all these types of questions in our classwork, so this is not difficult for you to do these pages. Okay dear grade 6 students, this is all for today. Good luck. Allah Hafiz.